नवंबर 2020 वैश्विक महामारी कोरोना के खेल के बीच भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। We finished our IPL and went to Australia. Initially we were supposed to go to Brisbane, but Brisbane में हमें practice करने के लिए allowed नहीं था. So Sydney government said we can land there and we can practice. So when we landed there, we had to do 4 to 5 days of strict quarantine. First 3 or 4 days we were in our room, and then we were allowed to go and practice and then come back to our rooms. I don't think you've ever seen a tour start like this. We just came out of IPL bubble, which was preceded by an English bubble. Came home, quarantined for 14 days, and then we're basically straight into the Indian series. पहले 4-5 दिन मतलब प्रॉपर स्ट्रिक्ट था. इवन हमारा फूड बाहर आके रखते थे, हमें किसी भी चीज़ को टच करने के लिए अलाउ नहीं था. इवन दरवाजे के बाहर एक स्टेप भी लेना अलाउ नहीं था. The Indians knew what they were getting into when they came. They were signed off by their board. It was signed off by our board. We knew what we were getting into. Was it ideal? No, it wasn't. It was terrible. But at the end of the day, I've got a job to do and you get paid bloody well to do it. Yeah, it was frustrating time for the family because 2 weeks of strict quarantine for them. Rooms were really small and it was really difficult for our families basically. Whenever I used to come back, my wife used to give me that look that you are still going out, you are still getting fresh air. बंद कमरे में होते हो. After 4-5 days, it gets really depressing. I remember it didn't bother me too much. India, and I had a lot of sympathy for the position, said, we didn't come out here to do some hard quarantine or Sydney or Brisbane. We're not going to go there. And you kind of saw Ravi do that when he took the mask off and walked into the ground and showed a bit of attitude. They were bristling, and I got that they were bristling, but it kind of added this other layer of tension to the tour. It does annoy me and it does frustrate me when people who are actually a hell of a lot better off than a huge majority of the world whinge about little things like staying in a hotel for a week. I think it's pretty insignificant. और 1 महीना था टेस्ट मैचेस शुरू होने के लिए. So मॉर्निंग में T20 और ODI वाले प्रैक्टिस करते थे और आफ्टरनून में टेस्ट वाले प्रैक्टिस करते थे. We created rough in the nets. We used to scratch the pitches, and then Washington used to come and bowl at all the batters, which was outside the off stump in the rough. Needed to spend extra time in the nets against the off spinner, and that's when I was asked to stay as well. He was very consistent with his line and length. His pace is also a little quicker, so that helped us a lot when it comes to preparing against Nathan Lyon, and that was one of our game plans also. विकेट के पीछे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन और सामने से आती आक्रामक गेंदों के बीच भारत ने पहला प्रैक्टिस मैच खेला. पहला प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हुआ. हमारे पास सिर्फ 12 प्लेयर्स ही थे क्योंकि बाकी के सारे प्लेयर्स T20s और ODI में थे. ऋषभ पंत मैच के दिन उनको नेक स्पैज़म हुआ. I took a painkiller, everything, but I was unable to play. हमने कुलदीप को टीम में ऐड किया और हम 5 बॉलर्स के साथ वो मैच खेले. All class, Ajinkya Rahane, the captain of India, pushes into the covers, picks up 2. एक के बाद एक भारतीय बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे थे, पर रहाणे अपने शानदार खेल के साथ 117 पर नाबाद रहे. Out. Bowls as much as he can. Oh, he's got a little feather on it on the way through, and Joe Byrne. Oh, that's a good catch. When I was bowling to Nick Maddinson, the only thing I was looking to do was to try and bowl at him like I would bowl to David Warner or maybe Marcus Harris later on in the series. Oh, big shout. It's in line and given. मेरा मैसेज उस वक्त यही था कि ठीक है एक प्रैक्टिस मैच है, बट हमारा एटीट्यूड, हमारी इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए जैसे हम टेस्ट मैच खेलने वाले हैं. Pukovski got injured. He got hit in the head in a warm-up game. He had a lot of concussion problems. And Pukovski was the great hope of Australian cricket. We were really looking forward to seeing this Will Pukovski, who we're told is a once-in-a-generation batsman. Second practice game was with the ping ball at SCG. Wide and put away nice. तो वो again, it was a first-class game for us. So उस वक्त हमारे सारे players available हो गए थे. तब तक T20s और ODIs खत्म हो गए थे. जस्सी भाई ने ऑन ड्राइव मारा तो कैमरन ग्रीन के सर पे लग गया. जो आवाज़ आई थी मैं तो सोचा डेब्यू होने से पहले बंदा गया. नेचुरली मैं मतलब उतना सोचा नहीं कि अरे डायरेक्ट चले, मतलब कुछ भी नहीं. जैसा आवाज़ सुना मैं बैट चला डायरेक्ट उसके पास गया. मतलब एक अंदर से आया था कि वो मार भी जोर से लगा था.
Virat Kohli is not playing. And I know there's a lot of Australian journalists who had landed up in the SCG press box just to see Kohli, because some expected Virat Kohli to play, especially the top order to play. I got 100 in the pink ball just before the test match. Getting the feel of the pink ball was quite good. A few fireworks. I scored 100 there. So it was something turning point for me. So I got some confidence in myself कि यार नहीं, you keep focusing, thing will fall in place, you keep focusing. Rishabh Pant made this incredible 100. It was just a wow statement. This guy is dangerous. He can do anything with a bat. पिंक बॉल से यही होता है कि आप इनिशियली पहले 2 सेशन में जितने ज्यादा रन बना सकते हो उतना आपके लिए बेटर है. When the lights come on, it's a little more challenging when you're facing the fast bowlers. I spoke to a ball manufacturer about why the pink ball feels different in the hand. The seam just feels better. The grip just feels better than a red ball. The reason is the leather of the cricket ball can only soak in the red paint properly. It's made for that. But with the pink ball, the lacquer is a little more different, that it creates different pace. Cricket ball is a cricket ball. I think a lot of the stuff with the pink ball, like there's no doubt it's a little bit harder. But it's no different to a ball moving around in England. It's just a moving ball. Australian team had the most success with the pink ball compared to any other team in the world. And especially when they were playing in Australian conditions. I don't think it's because we've won them all, but I have thoroughly enjoyed every day night test I've played in because it is a different challenge. I like it. It's just a different pace to red ball cricket. Nothing can be happening, and then suddenly, in the space of half an hour, the ball just starts swinging and nipping around for no apparent reason. People seem to be scared about playing in a team test match. It's a great thing for the game. That's what frustrates me. We had only played 1 test match with the pink ball. So moving into that game, in Australia you play with Kookaburra ball. When we played with the pink ball in India, it was SG ball. खूबसूरत एडिलेड ओवल ग्राउंड. यहाँ ऑस्ट्रेलियन टेस्ट समर की शुरुआत के लिए सटीक व्यवस्था थी. दर्शकों की सामान्य जीवन में वापसी होने लगी थी. विराट के कप्तान रहते टॉस जीतकर भारत ने कभी हार नहीं देखी थी. We've prepared really well. The boys have had a lot of time to work in the nets. A couple of tour games as well. So yeah, everyone's well prepared. We understood the combination that we wanted to go in with, and we pretty much had everything clear on our end, and hence we announced the team yesterday itself, and everyone seems to be pretty excited and calm at the same time heading into the first test. I got to know one day before the match that I'm not playing. He's going to be amazing in the test series, so we're pretty surprised when he didn't actually front up for that first test. I was disheartened because in Adelaide I played my first match in Australia when I went last time. He was expecting to play the first game, but हम लोग रिद्धिमान के साथ गए क्योंकि रिद्धिमान obviously was a senior player. Greetings, friends. I greet you to the spirit of this place. I come from the old people, the ancient people of this land. This is a place where we all come together, walk softly, respect each other, and respect this country. पारंपरिक स्वागत के बाद आधुनिक क्रिकेट की एक बड़ी प्रतिद्वंदिता की नुमाइश तय थी. टेस्ट सीरीज विजेता बनने के 2 साल बाद टीम इंडिया कंगारुओं को एक बार फिर पछाड़ना चाहती थी. खेल के मैदान में जंग होनी थी. The red Kookaburra ball has not swung for a long time now. The pink ball generally does something. So Mitchell starting to get that hooping back in towards the stumps. 3 slips going, pink ball. Will it hoop? Howie. Been a tremendous build-up. Set for the first delivery. Reporting in the Sky Series in Adelaide. Stark steams in. Shaw defends away. This first over can set the tone. That's the job of the opening bowler. Set the tone for the bowlers and the batsmen. This is what's in store for the rest of the day. पहले विकेट के अशुभ दृश्य के साथ खेल की शुरुआत हुई. चेतेश्वर पुजारा, इस नाम ने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को बहुत सताया था. Pujara defends. I would say we start okay. We probably lost Prithvi Shaw a bit early in the game, but then we resurrect, right? And Puji bats well, Mayank fights.
confident punch through the covers from Agarwal. विराट कोहली यहां पहुंचने से पहले कई सवालों के साथ महीनों तक सुर्खियों में थे। क्या वो इस दौरे पर आएंगे? और अगर आएंगे तो कब तक के लिए? पर कोहली सिर्फ हेडलाइंस के साथ ही नहीं, रन्स के साथ भी ऑस्ट्रेलिया आए थे। मैच का टोन सेट किया और इस टूर के अपने इकलौते टेस्ट में कई पलों को अपने नाम किया। पिछले दौरे पर पुजारा को 1135 गेंदें खिलवाना ऑस्ट्रेलिया को भारी पड़ा था। सबसे ज्यादा गेंदें उन्हें नेथन लियोन ने की थीं और एक बार फिर धैर्य और दृढ़ता एक दूसरे के आमने सामने। He's a world-class bowler. He knows what my game plans were. This time he had watched all the videos from 2018-19 series, so he had made some adjustments, and he was up for this challenge because his pace was different, his lines were different. He was expecting me to step down every second ball, which was very good of him. And then bats. Pujara survives. He never made things easy for me. He countered my game plan. इस बार नेथन लियोन की बारी थी। इस ऑफ स्पिनर ने पुजारा के गेम प्लान को समझकर उनके डिफेंस को ब्रेक कर दिया, पर तब तक पुजारा ने कंगारुओं को अच्छा खासा थका डाला था। पिच पर खड़े कप्तान को उप कप्तान का साथ मिला। Our communication was really good between Virat and I. And ये था कि जैसे सेट हो जाने के बाद it became really easy. Yeah, I must admit though, when he was batting, he was on 20 or 30, and then the lights came on, and I was like, wow, he did not look like getting out, did he? And I was like, we are in some serious trouble here. गौधुली, टेस्ट का ट्वाइलाइट जोन। इस समय पिंक बॉल थोड़ी मनमानी करती है, पर कोहली और रहाणे अच्छे तालमेल के साथ पिच पर डटे रहे। ऑस्ट्रेलिया के अपने पसंदीदा एडिलेड ओवल पर कोहली ने 2012 में अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई थी और आज उनका अंदाज उनके चौथे शतक की तरफ इशारा कर रहा था। कोहली आसानी से 50 रन तक पहुंच गए। हम दोनों की जब भी पार्टनरशिप हुई है, हमारी पोजीशन हमेशा अच्छी रही है एंड वी एंजॉय बैटिंग विद ईच अदर। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं अटैक करता हूँ, शायद वो डिफेंसिव रोल लेते हैं, वो अटैक करते हैं, मैं डिफेंसिव रोल लेता हूँ, और वो जो एक ट्रस्ट है हमारे बीच में, वो काफी अच्छा है। एडिलेड के शानदार सूर्यास्त के बीच कोहली और रहाणे की जुगलबंदी देखने लायक थी। भारत अपने कप्तान और उप कप्तान के साथ आगे बढ़ रहा था। तो वो पार्टनरशिप उस वक्त जैसे चल रही थी हमारे बीच में, वी न्यू दैट कि हम एक अच्छी पोजीशन में है और यहाँ से अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हम जरूर टीम को एक अच्छे और कमांडिंग पोजीशन में लेके जाएंगे। कोहली संयम से खेल रहे थे, इतना कि अपने पहले कवर ड्राइव के लिए उन्होंने 144 गेंदें खेली और करीब उतनी ही पहले पुल शॉट के लिए। अब पैर जम चुके थे और टाइमिंग पर कंट्रोल भी था। बॉल्स बाउंड्री पर जा रही थीं और रहाणे भी बराबर साथ दे रहे थे। पिंक बॉल के उस्तादों की उस्तादी गायब होती दिख रही थी। I do remember for about 40 minutes I was like, oh Christ. Yeah, when he got through that first period of night, I thought, in trouble. Rehane looked just as good too there for a little while. They were batting beautifully. Yeah, and then thankfully Rehane ran him out. It was brilliant. I don't think वो मोमेंट मैं कभी भूल सकता हूँ, या शायद कोई भी भूल सकता है। मेरे बैट को बॉल लगा, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैंने कितना अच्छा टाइम किया बॉल, और आई थॉट इजी सिंगल है, मतलब वो इंस्टिंक्टिव कॉल था, और मैंने 2-3 कदम आगे लिए एंड जैसे मैंने देखा बॉल वाज नेक्स्ट टू द हेजलवुड और उसके हाथ के नीचे बॉल था,
And then I had to say no. आउट होने से पहले मुझे लगा कि ये मोमेंट है गेम का. And that's when I had that reaction. I immediately said sorry to him. हाँ ना की दुविधा में खेल खत्म. ऐसा कम ही होता है जब विपक्षी कप्तान के आउट होने पर ऐसा माहौल हो. कंगारुओं को छोड़कर सब स्तब्ध थे, क्योंकि कोहली जम चुके थे और अपने इकलौते टेस्ट को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे. ऐसा हो ना सका और एक झटके में सब कुछ बदल गया. मुझे यही था माइंड में कि शायद ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है गेम पे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. Yeah, well, particularly when you feel so out of the game, and we couldn't create a chance, and they were batting so well, to then be literally just gifted one, and a really simple one of their best player who was making it look pretty easy, in a difficult conditions for a new batter to come in against the pink ball under lights. It's a hard place to start your innings. Yeah, that was a huge shift in the game. Like, they were not far off taking that first test completely away from us, I think. अब जिम्मेदारी थी हनुमा विहारी पर. क्या वो रहाणे को वर्तमान में ला पाएंगे? He was obviously gutted with that run out, like all the other partners do. I was trying to tell him that, you know, let's move on from there and get a partnership. But you know, when you lose Virat Kohli that way, it will definitely affect the partner. But again, we tried to move on and stitch a partnership. रहाणे सेट थे, पर वो उस रन आउट के कॉल को नहीं भुला पा रहे थे. उनकी आंखों में एक ही कहानी बार बार दिख रही थी, कोहली का रन आउट. और इसका असर रहाणे पर हुआ. ज्यादा संभल के खेलना शुरू किया, पर वो कोशिश भी नाकामयाब रही. मेरे दिमाग में कंप्लीटली वही चल रहा था. And that was the reason he got out. जनरली वो बॉल में अच्छे फुटवर्क करके मैं मिड ऑन की तरफ खेलता हूँ, बट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड 2-3 ओवर्स बैक, वो मेरे माइंड में चल रहा था, एंड आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक. क्रिकेट में रनआउट कोई बड़ी बात नहीं है, पर रहाणे ने कोहली के रनआउट को खुद पर जरूरत से ज्यादा हावी होने दिया. झुके कंधों के साथ रहाणे निराश होकर पवेलियन लौटे. When I went inside the dressing room, I went to him and I said sorry. And he said, ठीक है, ऐसे होता है, ये पार्ट एंड पार्सल है, और डोंट वरी, सेकेंड इनिंग्स भी है हमारे पास, तो हम ज़रूर वापस एक पार्टनरशिप बनाएंगे और टीम को लेके जाएंगे. अभी बैटिंग बाकी है, उसके बाद हमारी बॉलिंग भी आने वाली है, सो स्टिल लॉन्ग वे टू गो इन द गेम. बट समहाउ मुझे अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मोमेंट था गेम का, जो रनआउट अगर नहीं होते थे तो शायद गेम अलग दिशा में जाता था, और रनआउट के बाद गेम कहीं और ही चला गया. कोहली जब आउट हुए तब दिन के 14 ओवर बचे थे. भारत तब तक खेल के नियंत्रण में था और कप्तान पेन को कुछ सूझ नहीं रहा था. पर अब माजरा बदल गया था. अब ऑस्ट्रेलिया खेल के नियंत्रण में था. ऐसे में साहा और अश्विन को उनके अपने हिसाब से खेलने को कहा गया. With Vikram, I had planned it. That I would go, I would show intent. It's worked for me. I've made runs in Australia before. I've made runs at Adelaide, so I will show intent. If it's there, I will go for my shots. And I'm not looking to, you know, preserve my wicket or anything like that. On a ball, the first day's play. Hazelwood to Saha. Leaves it alone outside of stump. पहले दिन का खेल मानो 2020 की दास्तान संक्षेप में बता रहा था. हर तरफ सब सामान्य, पर अचानक एक छोटी सी गलती और भविष्य खतरे में. ऑस्ट्रेलिया हावी था और वो दूसरे दिन के खेल के इंतजार में था. भारत के इस विकेट के बाद सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज बचे थे, ये बात दोनों टीमें जानती थी.
his first ball of the day. Straight up in the air, mid off, running around, settling underneath it. Oh, great catch. Oh, straight up in the air. It's a golden duck for Shemi. भारत के आखिरी 7 विकेट सिर्फ 56 रन जोड़ पाए. I thought we bowled okay in the first innings, but we hadn't fully clicked. Virat Kohli leading the Indians out into the middle on a glorious afternoon for cricket. Australian Opens, here they come. Burns. वनडे में हुई इंजरी की वजह से डेविड वार्नर पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे. फर्स्ट टाइम ओपनर मैथ्यू वेड और आउट ऑफ फॉर्म जो बर्न्स की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी. Opening the batting. जसप्रीत बुमराह 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में स्टार बन चुके थे, पर इस बार एक चीज अलग थी और वो थी पिंक बॉल. पहली बार पिंक बॉल के साथ खेल रहे बुमराह ने दोनों ओपनर्स को बुमराह स्टाइल में पवेलियन भेज दिया. रविचंद्रन अश्विन का बॉल और उंगलियों के साथ कुछ न कुछ आविष्कार चलता ही रहता है. प्लेइंग 11 के वो अकेले ऐसे प्लेयर थे जो एक दिन पहले के ऑप्शनल नेट सेशन का हिस्सा बने, इस उम्मीद में कि स्पिन की दुनिया में कुछ नया मिल जाए. Practice session just before the game, right, with Bharat Arun. I tell him I'll get Steven Smith out for you this time, and he's like, "That'll be amazing. We are very confident that you." I told him, "No, it's got more meat than what I'm saying. I believe I can get him out because I think I understand how he bats and how he flows and what he likes and what he doesn't like, and I think I can play around. If he's got too many moving parts. He's got a flow to his batting. It's like dance, right? If your hips don't move, you look like a terrible dancer. So he's got certain spaces of his batting which needs to flow for him to be able to make those runs. And he loves batting in that particular dance motion. So I felt like I had something up my sleeve which could upset him. अश्विन ने स्मिथ के डांसिंग मूव्स को गहराई से समझा. स्पिनर्स को खेलने वाला बेस्ट बैट्समैन और सामने सबसे बढ़िया स्पिनर. ये नजारा अपने आप में रोमांचक तो था, पर दोनों में से जीतना किसी एक को ही था. Once I got Steven Smith out, it's like my dance started moving. The ball was coming out like the way I want. Travis Head, the ball drifted, just dropped enough to, get a leading edge. Oh, he's now going to get his opportunity because Head departs. Wow. Boomed it straight. A batsman needs to be in a love affair with his bat. Likewise, a bowler needs to be in a love affair with his ball. So the ball just started listening to what I was doing. Cameron Green, on hindsight, looked like he went to a ball that might have been shorter, but it just hustles him and hits him on the top of the blade. Obviously, Virat flings himself to take a great catch. अश्विन ने ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर को वापस पवेलियन भेज तो दिया, पर मार्नस लाबुशेन अभी भी भारत और उसकी लीड के बीच में डटा था. भारत मार्नस लाबुशेन पर बहुत मेहरबान था, क्योंकि इतने जीवन दान मैदान में किसी को नहीं मिलते. 111 पर 7 विकेट के बाद भी खेल में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कुछ बाकी था. Takes it on, man, out there, dropped it. It's a brand new stadium. Aerial. It's under it. Well, this has gone high up in the air. Sahara's after it. So catches के बारे में अगर मैं बात करूँ तो that's again a part and parcel of the game. जैसे रन आउट और ये सब है, वैसे ही कैचेस आप छोड़ते हो तो कोई डेलिबरेटली या कोई जानबूझ के कैचेस नहीं छोड़ता. Too quick to the ball. You have to hurry. Tight one.
जस्टिन लैंगर ने एक बार पेन को टफेस्ट प्रिटी बॉय बुलाया था और अब कोच को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पेन अपनी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन बखूबी दिखा रहे थे। इसी खिलाड़ी ने 2018 के सैंडपेपर गेट स्कैंडल के बाद से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को वापस से खड़ा किया था। 2 साल बाद पेन टीम में उभरते लीडर के रूप में सामने आए और एक बार फिर अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश में थे। More aggression from Payne. When he goes, he always goes hard. He goes for the pull shot, but he'll fetch a 4. कल बल्लेबाजी में जहां भारत असफल रहा था, वहीं ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम के बल्लेबाज आज सफल हो रहे थे। आखिरी 2 सैनिकों के साथ ऑस्ट्रेलिया जंग में वापसी कर रहा था और भारत को उन्हें अपनी सीमा से पहले रोकना था। Catching practice to finish off the innings for Australia. I was disappointed that we were bowled out because I felt like I'd taken their best for that sort of hour and had got through it and was still looking to score. So it was there's a shame that we got bowled out. भारत की गलतियों ने ऑस्ट्रेलिया को 111 पर 7 से 191 ऑल आउट तक जाने का मौका दिया। टीम इंडिया की 53 रनों की लीड फिर भी एक उपलब्धि थी। I felt really confident still, bowling in Adelaide. I think they had a first innings lead, but I thought we could drag this test match back for us. वो कैचेस के बारे में उस इनिंग में हमने तो नहीं सोचा, लेकिन अगले दिन जो हुआ तभी ज़रूर हमने सोचा कि ये कैचेस अगर हम शायद पकड़ते थे तो अगेन गेम कुछ और होता था। ऊपर से भारत को तीसरे दिन की बेस्ट बैटिंग कंडीशंस पर वापस बल्लेबाजी करने का अवसर था। कोहली और रहाणे साथ अच्छे मूड में बाहर आए और लीड के बाद शायद गिले शिकवे भी मिट गए थे। हो सकता है दूसरी पारी के लिए अच्छी पार्टनरशिप की बातचीत भी हुई हो, पर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। I don't think anyone saw coming what happened that morning. That was quite extraordinary. But what do I say? It's bizarre, man. I mean, even looking at it today, it has to go down as one of the most bizarre passages of play that I've been involved in. मैं बोला ये क्या सपना है क्या? तो एकदम से मतलब वो किसी को समझ ही नहीं आया वो टाइम पे क्या हुआ। ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल आउट हुई। उसी दिन वी हैड टू बैट ऑलमोस्ट 10 or 12 overs. So उस दिन हमारा 1 विकेट गया था। पृथ्वी शॉ एक बार फिर क्लीन बोल्ड, पर बुमराह अलग कॉन्फिडेंस में थे। सिडनी में अपनी पहली फर्स्ट क्लास हाफ सेंचुरी की थी, वो भी पिंक बॉल पर। कॉन्फिडेंस तो बनता था। Myself and Virat, both of us were supposed to bat next. So we were the loudest that Bumrah, please make sure that we don't lose another one. And he batted well. And I thought that was the biggest positive in that innings. बुमराह ने वही किया जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। नाइट वॉचमैन ने अच्छे से चौकीदारी की। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की उलझनें और भारतीय खेमे की मुस्कान गेम में उनकी स्थिति बता रही थी। अगले दिन जब हम वॉक कर रहे थे तो एडिलेड में जब आप ग्राउंड पे आते हो जहाँ पर हमारी बस पार्क होती है तो आपको एक टनल से वॉक करते हुए ग्राउंड क्रॉस करके ड्रेसिंग रूम की तरफ जाना है। तो वो एक ऑलमोस्ट 5 मिनट का वॉक है। वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट गेटिंग क्लोज टू 250 मार्क इन द थर्ड इनिंग एंड द गेम विल बी नाइसली पॉज्ड and we will be in a good position. I still remember arriving that day quite nervous, thinking this is going to be a real fight. This is going to be a battle for 5 days. This is a spirited Indian team who are hard to beat. And it's away for Agarwal. First boundary of the day. बुमराह अगली सुबह जल्दी पवेलियन लौटे। पुजारा भी बुमराह के पीछे पीछे पवेलियन आ गए। कोहली इस टूर की अपनी आखिरी पारी के लिए मैदान में उतरे। मैं जब बैटिंग करने गया 2-3 बॉल में खेला और 4th बॉल आई गॉट आउट।
came back and I was जैसे नॉर्मली आप आउट होके आते हो तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होते हो और आके मैं ऐसे ही हाथ सर पे लगते हुए पैड्स मेरे ऑन थे और ऐसे बैठा रहा। एक बैट्समैन आया, दूसरा बैट्समैन आया, जो भी कोई बैट्समैन खेल रहा है कॉट बिहाइंड हो रहा है। पूरा एडिलेड ओवल जानता था कि यह विराट की इस दौरे की आखिरी पारी थी। सारा स्टेडियम स्तब्ध था। कंगारुओं को छोड़कर हर तरफ निराशा और सन्नाटे का माहौल बन गया। Yeah, it was a crazy sort of hour, wasn't it? Like it was high-level bowling, but again, normally, you know, I've seen Josh and Pat bowl that well before. You just don't get nicks, you get 4-player misses. And the day it was 4 nicks, and they're all straight to me, and they weren't tough ones, they weren't diving ones, they were all feathers, like straight in the gloves. So, yeah, it was an extraordinary performance. बाहर की तरफ खेल रहा है तो इनसाइड जा रहा है, कोई सीधा खेल रहा है तो आउटसाइड एज लग के जा रहा है, कोई फ्लिक कर रहा है तो स्क्वायर लेग में कैच जा रहा है, कोई ड्राइव कर रहा है तो गली में, मतलब जो भी बॉल हम खेले सारे एज लगे। छब्बीस पर 8 विकेट गिरने के साथ भारत टेस्ट मैच के सबसे लोएस्ट टोटल के रिकॉर्ड की बराबरी पे खड़ा था। All of a sudden, an international cricket team looks like a club side that just gets out 36, no match. There's always collapses, but there's always a partnership in a collapse. If we had a small partnership, then we would have recovered from that. That partnership never came. टी के बाद मेरा सेशन था क्योंकि पानी वानी पिलाना है, तो मैं जब तक मैं अपना जिम विम करके जो भी ये कर लूँगा बोल के मैं जिम में गया। जिम को जाके आया तक देखे तक अलॉट हो गए हम लोग। Go out to bat, us tailenders, we cop it all the time from other teams, and for me it's fair game. If the batter doesn't want to face it, no one's forcing them to go out and face it. They can retire. There was a gentleman's agreement in the old days that bowlers didn't do it to bowlers. Yeah, it's not the old days. Oh, that's nasty. ये एक बड़ी चोट थी। मोहम्मद शामी उन बल्लेबाजों में से हैं जो रूम बनाकर खेलते हैं ताकि वो अपने अंदाज में खेल सकें, लेकिन पैट कमिंस के सटीक बाउंसर ने उन्हें फॉलो किया और उनके उसी हाथ पर चोट की जिसके लिए वो प्लेइंग 11 में थे। कई टीम मेंबर्स मैदान में पहुंचे, पर अब संभालने के लिए क्या बचा था? शायद शामी की हिम्मत, जो किसी भी सूरत में अपने दर्द को देश के लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। जज्बा ही मायने रखता है। He went for a scan and we found that there was a fracture and he wasn't available for the entire series, which was a big blow for us because Virat was leaving after that game and Shami also was going back. Pretty happy I wasn't happy that he broke his arm, but very happy that he wasn't playing because I really battled with him the last series in Australia because he's quicker than you think. He bowls the same pace all day. So I always found it hard to face him because he doesn't give you much to score off either. उसके बाद जो हुआ, मतलब they had to chase some 70 or 80 runs
और बाद में हमें मतलब हम गेम में नहीं थे. We had to go out there and bowl. That was even worse, you know. Even fielding करते वक्त हम सारे blank थे. जो सुबह हम बात कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले कि अगर हम 240-250 के पास पहुंचते हैं तो गेम कुछ अलग होगा. बट रियलिटी में कुछ अलग ही हो गया. It was a good way to wrap up a test match that we thought we'd arrived for the day thinking we got 2 or 3 days here where we're going to have to fight our backsides off to win a test, and to have it all over in 2 hours was extraordinary. To be honest, I mean, there were some good balls, but I don't think the ball did something drastic in the morning. It was just the mindset that put us into positions where the ball took edges, and it was pretty evident in the way we went about things, just losing one wicket after the other, just created an atmosphere where you felt like runs are so difficult to come by now, and the bowlers obviously got more confidence and got a boost from that as well. And I think it was a combination of both lack of intent and consistent areas from the bowlers as well. One thing I still felt that which we didn't do right when we were losing wickets was whether to attack or defend. We were not very clear with that. But apart from that, I felt that they bowled really, really well, and we have to give credit to the Aussie bowling line. We collapsed actually. They bowled in some good areas. We played some bad shot also. To bowl that Indian team out for 36 was pretty amazing. India has recorded historic low total. The only Indian I think that enjoyed that innings was Sunil Gavaskar, who'd been part of the previous lowest total, and he'd now had that record taken off his hands. ऐसे कैसे हो सकता है? 36 all out. We were under so much scrutiny as an Indian cricket team. Pressure. We were feeling the heat. इंडिया के पास एक ही मौका था एडिलेड में जीतने का, वो भी मैच वो हारे. सारे एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर बने थे. आपको पता ही है कि सबको एस्ट्रोलॉजी करने का बहुत शौक है. They made it sound like this Australian attack is invincible. Many ex-cricketers from all over the world were saying that this team will lose this series. It could be 4-0, it could be 3-1. So there was a lot of pressure on the team. We didn't bowl that much differently to what we have in other series where suddenly we were the best bowling attack in the world. So we know that you don't get too caught up in the highs or the lows. You just turn up and you do your job each day as best as you can. And that day was no different to any other. Like as a cricketer, even you're thinking, okay, 36 all out. They're saying this attack seems like the West Indian attack. So it must have been that. We're probably not good enough to take this attack on, or probably they're the greatest. When you saw them lose and lose that quickly with Virat in the team, and then you saw Virat get on the plane and go home, you thought, oh God, they're gone here. They're 1-0 down. How do you recover from something like that? Virat Bhaiya was leaving. He was captain of the team. Captainy ऐसे match के बाद ऐसे तो we were more under pressure. To jump out of that or to nip out of that was very, very hard, because the narratives going around again was now Virat is going after this test match, and this Indian team will be steamrolled. And knowing how big a player Virat is to their side, the tour could get derailed pretty quickly once he left if we got on top of them. There is no other cricketer inside that dressing room that's worth his salt that can stand up to this Australian cricket team. And that was a narrative not just internally built up, it was also built up back home. I was among those who wondered, what now? Can this Indian team really pick themselves up? Virat was going, so we decided that we'll have team dinner. We'll play some team games. We had one sort of a team bonding activity, a karaoke night, and doing damsharaj. In fact, Ravi Bhai put on an act of a couple of old cricketers. So we just wanted to get off cricket se thoda dur jate hue. We wanted to have fun as a team. One of the ways to manage a really bad outing or defeat like that is to the proverbial naughty boy nets, or the extra fitness session where you get a workout as punishment, which a number of coaches still do. Probably the more enlightened approach is which India took, is to say, let's actually be light, let's shrug this, let's let this monkey get off our shoulders and actually have some fun, enjoy ourselves. It was about getting the sort of people out of the room and getting the uncomfortable feeling. It was sort of nauseating, right? You get all of 36 and you feel like,
yucks, you know, we've been bowled out for 36. Laugh and smile, because at the end of the road, it's a bad result, but it's just a result which is in the past, and we have a new day tomorrow. And the best way to press the reset button and come back with fresh minds is to really just have some fun, express, allow the emotions to come off. Laughter is one of the best ways to do it. रवि भाई ने कहा विराट को कि आपको अगर कुछ बात करनी है जाने से पहले तो आप बात कीजिए. He said all the best guys do well. I know we are not in a very good position, but still, as an Indian team, we will come back stronger. तो रवि सर ने यही बोल रहा था कि एक बुरा सपना था, इसको मतलब ये हो गया. अभी आगे तीन मैच थे तो उन लोगों के ऊपर फोकस करेंगे. ये हो गया. सो एडिलेड में सारा सब कुछ खत्म हुआ. जैसे हम मेलबर्न जा रहे थे तो किसी ने आके मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलियन जो एक्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है एक्स कैप्टन्स हैं, वो ऐसे प्रेडिक्शन दे इंडिया विल लूज 4-0, ये सीरीज वाइट वॉश होगी. मैच के बाद आप शेक हैंड करते हो, अपोजिशन टीम को आप मिलते हो. आई सॉ लिटिल बिट ऑस्ट्रेलियंस के आइज में कि उनको ऐसे लगा कि अब सीरीज खत्म हो गई. एंड आई रेड दैट, क्योंकि विराट वॉज गोइंग, शामी वॉज इंजर्ड. सो दो हमारे जो मेन प्लेयर थे वो अवेलेबल नहीं थे अगले 3 मैचेस. सो ये मेरे दिमाग में मेरे पार्क कर दिया था. एंड इन अ वे आई वॉज हैप्पी कि सभी लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं 4-0, वी हैव समथिंग टू प्ले हियर. एंड फॉर मी सीरीज एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम देयर. एडिलेड से जब अब मेलबर्न जा रहे थे, सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम देयर. I don't care what people are talking about us. I don't care if they're writing us off. For me, what is important is we are playing for our country and we are going to give our best. And our series starts from now. I'm missing the top of my middle finger on my bowling hand. I lost that when I was 4 years old. My sister was in the bathroom and I just opened the door a little bit and I was waving a lollipop through the door, and she just came and slammed the door and the top fell straight off, so I was rushed off to hospital. They couldn't sew it back on. I do think it's probably harder for me to hold a really good seam when I'm bowling. You know, things like a wobble seam I've probably spent more time trying to perfect rather than a perfect seam. I was playing so badly that it wasn't even funny. I was playing grade cricket in Tasmania, couldn't get a run. And then the opportunity came up to work for Kookaburra, and yeah, I agreed to that. I actually told Cricket Tasmania that I was going to take the job, and then the incoming CEO basically talked me out of it. The rest is history.